अटैक 25 रु 45 वर्ष मध्य हेउछंती अधिक आक्रांत प्रतिदिन 900 रु अधिक व्यक्ति होउची डेथ प्रति गोटे मिनिट रे 4 जन को हेउची शिकार। मुंबई रा मार्शल आर्ट चैंपियन मोहित शर्मा टूर्नामेंट खेलुथिला बेले हार्ट अटैक रे डेथ सेते बेले तांकू केवल 21 वर्ष होइतिला। कोलकातार 26 वर्षीय युवती ऑफिस रे काम करुथुबा बेले सडन डेथ समस्त को आश्चर्य करिथिला। इंदौर रे गोटी बाहाघर रे नाचिथिबा बेले 23 वर्षीय युवतींकर हार्ट अटैक रे डेथ अथवा गुजरात रे 28 वर्षीय क्रिकेटर बैटिंग करुथिला बेले चौका मारिबार 1 मिनिट पर हार्ट अटैक रे क्रीज उपरे टळी पड़िले। केवल सेतिकी नुहे सिद्धार्थ शुक्ला, शेफाली जरीवाला, पुनीत राजकुमार, केकेंको भली अनेक सेलिब्रिटी हार्ट अटैक रे सडन डेथ न्यूज पर आमे निश्चिंत भाबरे आम हार्ट को हेल्दी रखिबा पई चेष्टा आरंभ करिबा उचित। साउंड्स डिस्टर्बिंग राइट आउ यही सब न्यूज जोड़ाक मुझे डिस्कस करी से गुड़िक आमको क्वेश्चन करुच्ची आमर बिलीफ सिस्टम जे केवल ओल्ड एज रे ही हार्ट हेल्थ कंप्रोमाइज हुए कि डिजीजेस बाहर तो यंग एज रे भी आजिकल डिजीजेस बहुत बहुत रैम्पेंटली देखा मिलूँ बहुत कॉमनली देखा मिलूँ तो या आम प्रिवेंट केमती करवा से गुड़िक विषय में आमर सिंपल क्वेश्चंस कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस को आंसर करने लगी आम सांगे अच्छा मोस्ट रेनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर महेंद्र प्रसाद त्रिपाठी। नमस्कार सर। नमस्कार। सो सर आपण मत कहतु कि आपण निजर हार्ट हेल्थ पाई कौन करते फॉर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ योर कार्डियक हेल्थ? वो एक्चुअली हेल्दी हार्ट विषय जानिया पे तब से प्रिएम्बल जानिया पड़ो। हेल्दी हार्ट मीन्स हेल्दी हार्ट डाइट 1, नंबर 2 एक्सरसाइज। द रिकमेंडेशन ऑफ एक्सरसाइज 150 मिनट मॉडरेट टू सीवियर इंटेंसिटी एक्सरसाइज पर वीक किंबा 90 मिनट्स ऑफ इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी पर वीक। इट में 5 दिन सप्ताह 5 दिन एनफ। 2 टोबैको यूज इन एनी फॉर्म एंड अवेयरनेस ऑफ अर्ली डिटेक्शन डायबिटीज ब्लड प्रेशर एवं सेडेंटरी लाइफस्टाइल यही सब जिनस गुड़ इंडियन पर्टिकुलर एशियन मानकर यहाँ हूँ भेरी कमन से लगी ये सब जी गुड़िक कहली से गुड़िक मुझे मात्रा पालन कै। आजिकल आमर यूथ मासेस रे कार्डियक इश्यूज हार्ट अटैक्स तार अकरेन्स बहुत स्पीडिली बढ़ुची बहुत रैम्पेंट अच्छी तो यार कॉजेस कौन सर कौ जिनस को आप ब्लेम करेंगे गुड़ाक रिपीटेडली अकर कर एत फ्रिक्वेंटली हबार? आमर जी स्टडी अच्छी से स्टडी अनुसार आमर कोरोनरी डिजीज रक्त कोरोनरी आर्टरी जो ब्लॉक है हार्ट अटैक एवं रिलेटेड डिजीज गुड़िक 10 वर्ष अर्लियर अमेरिकन कि यूरोपियन काउंटर पार्ट हुए। यार कारण जदिव इंडिया रे विशेष स्टडी है किंतु जीक स्टडी है नंबर 1 कॉज इज सेडेंटरी लाइफस्टाइल नंबर 1, नंबर 2 एक्सटेंसिव यूज ऑफ टोबैको, 3 very high incidence of diabetes, and 4th is stress in life, and taking unhealthy diet and some genetic factors which is not yet known किंतु ये सबुड़ी को मिसाई देले आमर जो कोरोनरी डिजीज एशियन पर्टिकुलर साउथ ईस्ट एशियन मानकर 10 वर्ष अर्लियर होची आधे मोस्टली आम सबुड़ी को सबसेट सबुड़ी एनालिसिस करवा। It is a diet, use of tobacco and sedentary lifestyle, high incidence of diabetes and unhealthy dietary habits. एगुड़ सब प्रमुख कारण। सर टिके स्मॉल डिटेल्स को जीवा कि टोबैको केमिति डायरेक्टली ए टाइप रो इश्यूज को बेसी बढ़ावा दोची माने बढ़े केमिति दोची जिंसटा को आपण जति जीवे जति कोरोनरी डिजीज रो कारण होची एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस मींस कोरोनरी आर्टरी जोटा अछि तार डिफरेंट एनाटॉमी अच्छी इंटीमा मीडिया एंड एडवेंटिशिया अच्छी सो एनी इंजुरी टू द एंडोथेलियम जोटा इनर लुमेन जोटा अच्छी हार्ट आर्टरी सेटा जदि कौन
କାରଣରୁ ଯଦି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୁଏ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଆଉ ଫଙ୍କସନାଲ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେବ ଦେନ୍ ସେଠି କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଆକୁମୁଲେସନ୍ ହେବ ସେଇ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଆକୁମୁଲେସନ୍ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ବଢ଼ି ବଢ଼ିକିରି ଗୋଟେ ପ୍ଲାକ୍ ତିଆରି କରିବ ଏଇ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଟୋବାକୋର କମ୍ପୋଜିସନ୍ସ ଆର୍ ଥାଉଜେଣ୍ଡସ୍ Right. so I won't go into detail that but what it does it goes and injures the endothelial cells Right. that is called a chemical injury. Once there is an injury or disruption of the endothelium, then the harmful substance जोड़ा अच्छे blood रे सेटा endothelium media भीतर जीवो. Once they go into that place, they start the process of atherosclerosis. Right. So ଆମର यूथ मासेस बहुत थर रिलैक्सेशन ପାଇଁ स्मोकिंग भलिया हैबिट्स डेवलप करंती जेबे कि इट इज मोर इंजुरियस देन डू एनी गुड स्लीप रो किछि लिंक अछि कि कार्डियक अरेस्ट संगे रे Yes. So you say a healthy adult, the sleep leave aside the elderly patients or in child, the sleep period is 6 hours or minimum 6 hours of a good sleep. Right. So there are different types of sleep, NERM that I won't tell. But that sleep is hampered. The sleep is not of good quality, one. Number two, if the sleep is hampered by snoring, what you call OSA, so in those cases, these people are susceptible for coronary artery disease and several psychosocial disorders. राइट सर स्नोरिंग जो इश्यूटा आपण कहले सेटा हमर जस्ट हमर ले पर्सन व्यूअर्स मानकर अंडरस्टैंडिंग पई स्नोरिंगटा केमिति ग्रेजुअली कंट्रीब्यूट करे हार्ट हेल्थ को So you say normally if somebody is suppose sleeping, there is no obstruction. Obstructed sleep apnea means there is obstruction in the upper airways. ओके If there is obstruction in the upper airway means upon trachea and up to the mouth level, tongue fall back or more of fat tissue in the your throat. So that when the patient or person is asleep, everything is relaxed, so tongue falls. ओके Once it falls, it obstructs the airways. So during inspiration, there is problem. Enough of oxygen doesn't go inside, एब्सोल्युटली and patient doesn't also exhale correctly. So that leads to carbon dioxide retention and low of oxygen. रिजल्टिंग इन स्नोरिंग Yeah, so that what you call is a type 2 respiratory failure situation. And once this remains for long time, if you observe somebody at your home, snoring house, you'll see their sleep is totally disturbed. They will be just ଏକଡ଼କୁ ସେକଡ଼କୁ ଉଠୁଥିବେ ବସୁଥିବେ ବସିକି ଉଠି ଏମିତି ହେଉଥିବେ ଏଣୁ ତେଣୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଗପସପ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଫେର ଶୋଇପଡ଼ିବେ ଫେର ଘଣ୍ଟେ ପରେ ଫେର ଉଠିବେ ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇନ୍ ଦେୟାର ନଲେଜ୍ राइट this is only because of OSA, that is retention of carbon dioxide. This is a type of respiratory failure which happens time to time during the sleeping period. सो ऑन दैट नोट सर किछि एमती सुपर फूड्स अछि किबा किछि मिथ्स अछि कि डाइटरी मिथ्स कि किछि फूड ग्रुप्स कैंसल आउट कर देले हमरा हार्ट अटैक्स की कार्डियक प्रॉब्लम किछि हबनी देखो there is a lot of myths in cardiology and other also disciplines. So truth is always truth. For example, gote small example देबी blood pressure मापिबे ब्लड प्रेसर अधिक कहे केवे औषध खाइबे फास्ट क्वेश्चन तांकर हो जे मोर तो किसी असुविधा नहीं ब्लड प्रेसर कौन औषध खाइबे किंतु ट्रुथ होची ब्लड प्रेसर जो थाई थिबो ब्लड प्रेसर अधिक है कि तार सिम्पटम्स नहीं सिम्पटम हेला माने गोटे कॉम्प्लिकेशन लाइक रेनल फेलियर हार्ट फेलियर स्ट्रोक ब्लाइंडनेस सो सेतल को डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट कले तार बेनिफिट ऑफ ट्रीटमेंट लॉजेस टोटली सो से भाया सब गुड़ा बहुत मिथ अच्छे डाइट मु खाली गोटे एग्जांपल देबी रिगार्डिंग ऑयल्स व्हिच हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय लिपिड एसोसिएशन ऑफ इंडिया LAIUTEL से कहूँ जे in Indian people rice bran oil, then sunflower oil, canola oil
preferable. But one may use also our sorish telo. Most important is quantity. Okay. One is it should be approximately 15 ml per day per head. Our most important part होची आमर जो रोषेई जो cooking टा once you boil the oil repeatedly and deep fry the food जो fat टा अच्छी तेल रे it is transformed to trans fatty acids. So the good oil after cooking or reusing it becomes a bad oil. Right. So it has no meaning. ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ତ you cannot use always the new oil for the cooking, no? Same maybe leftover ସେଟା ଫେର use ହେବ ନା. Absolutely, sir. On that note, regarding the diet, ketata blogs and posts I have read about just having 1 tablespoon of a particular type of oil. Say olive oil ho, almond oil ho. Are these myths or they genuinely help with maintaining good heart health? No, it is total myth. Similarly, आपण मान भी देखते हुए संको गुआ घी नंतु गुआ घी नले किछि होबने it is safe, there is no atherosclerosis. That is not correct. जोठी आपनकर poly unsaturated fatty acid भलो बेसी अछि, that oil is good. Saturated fatty acid जोथरे अधिका अछि किमा trans fatty acid जोथरे बेसी अछि, that is not good. Because once you take trans fatty acids or upon saturated fatty acid, so it directly converted to LDL cholesterol को. Absolutely. LDL cholesterol है तो problem है ना. So से वाला भी कतुड़ी का study रे भी देखो चंदी. There is also scientific studies also, but there is not it prove any, and also at times refuted. ଯେମିତି କୋକୋନଟ୍ ଅଏଲ୍ ଖାଆନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଉ କେରଳରେ ଖାଉଛନ୍ତି କିଛି କିନ୍ତୁ ଇଫ୍ ୟୁ ସି କେରଳରେ ଭେରି ହାଇ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କୋରୋନାରି ଡିଜିଜ୍ କିନ୍ତୁ ପିପୁଲ୍ ସେ ୟୁ ଟେକ୍ वी आर टेकिंग नथिंग हैपेंस सो दिज आर ऑल मिस ऑन दैट नोट सर आमर पुरुष लोकंकर हार्ट हेल्थ एंड विमेन मानकर हार्ट हेल्थ एमानकर इंसिडेंस रेट्स ऑफ हार्ट डिजीजेस रे किछि डिफरेंस अछि कि ओडिसा हो कि इंडिया स्पेसिफिक जदी आपण किछि इनसाइट्स आई विल टेल इन जनरल एंड पर्टिकुलरली इन डेवलपिंग कंट्रीज हमर जो आपण मन जानथिबे जो हार्मोन अछि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन पर्टिकुलरली एस्ट्रोजन प्रोटेक्ट करिवो अगेंस्ट कोरोनरी डिजीज ओके सो मेनोपॉज पर्यंत maybe 45, 50 years. If the estrogen level is high, cycles यदि समानकर ठीक होची, the chances of coronary disease बहुत कम. Okay. किंतु once menopause है गले, post menopause, estrogen level कमी गला, the ladies माने हो, स्त्री लोग माने हो तो, समाने they are particularly susceptible, समाने कोरोनरी डिजीज इंसिडेंस बहुत बढ़ी जाए यदि आप देखिए 65 इयर्स से यदि कंपेयर करेंगे मेल एंड फीमेल 65 इयर्स स्त्री लोक मान को कोरोनरी डिजीज हाइपरटेंशन डायबिटीज अधिक मात्रा रह जाए ओके बिकॉज वंस द ट्रांजिशन इज ओवर द चांसेस ऑफ गेटिंग यही सब जिन हबार चांस बहुत बेसी हो जाए कारण एस्ट्रोजन इज ए प्रोटेक्टिव हार्मोन ओके ये गोटे इम्पोर्टेंट कारण आउ जो सोशल रिजन्स जोड़ा अच्छी वुमेन मानकर देखिए पर्टिकुलर आम जो देखो से कंप्लेंट गुड़ाक यूजुअली नॉट डिजीज स्पेसिफिक भेग एटी पेन होटी पेन हो चलले हो बसिले हो शोले हो सो इट डजंट फिट टू एनी पर्टिकुलर डिजीज इटा फिट न कले कन्फ्यूजन हाँ होता है ना हो पारे ये औषध खाता देखा सो दैट एग्रेसिवनेस ऑफ diagnosing and treating सेटा नहीं सर दिस इज वर्ल्ड वाइड डिफ्यूज माने ओटा जो कंप्लेंट करेंगे एटा संगे पेट मिसई देवे पेट गोड़ आंठू तो कोटा ताले एक्चुअल डिजीज सी गोटे सो डिजीज डायग्नोसिस टी लेट हुए डिजीज ट्रीटमेंट टी लेट हुए आउटकम भी लेट हुए सो से देखिए लेडीज मानकर यदि कोरोना डिजीज होची it is usually diagnosed late, treatment is given late, and outcome mortality मृत्यु संख्या morbidity बहुत high
in you compare to male counterpart. This is all over world. किंतु सर देखा मिलूँ आजिकल इंसिडेंट्स रेट्स रे कि विमेन मानकर इवन इफ दे आर अंडरगोइंग देयर मेंस्ट्रुअल साइकल्स सेते बेले भी दे आर डेवलपिंग हाइपरटेंशन तापरे आल्सो समटाइम्स हार्ट डिजीजेस तो याकू आपण को जिंस को हमें ब्लेम करबा या पई दैट विल कवर सो जो कॉमन रिस्क फैक्टर जोड़ा मैं आपन आगुर कहितली सेडेंटरी लाइफस्टाइल अनहेल्दी डाइट हाई इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज प्रेगनेंसी पीरियड रे दीटा तीन टा स्पेसिफिक डिजीज अच्छी जोटा प्रिडिस्पोज करे कोरोनरी डिजीज गोटा हो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज मेलाइटस आउ गोटे डिजीज अच्छी जो हार्ट मसल फंक्शन कम जाए से कहते पेरिपार्टम कार्डियोमायोपैथी ये जो दीटा जो डिजीज रहा तार इंसिडेंस अप्रोक्सीमेटली मे बी 5 to 10% तार इंसिडेंस बढ़ी जिते प्रेगनेंसी लेट हम लेट मीन्स आफ्टर एज ऑफ 35 ओके ये सब प्रेगनेंसी एसोसिएटेड हाइपरटेंशन के डायबिटीज टा बेसी मात्रा हो गले द चांसेस ऑफ cardiovascular disease developing during pregnancy and after pregnancy is high. So जो अपन जो क्वेश्चन पचारे ये जो रिस्क फैक्टर जोटा रहा ता सहित प्रेगनेंसी एसोसिएटेड फैक्टर्स मिसीगला सो सम ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन दे आर प्रिडिस्पोज टू दिस डिजीज किंतु अपन दे कंपेयर कर मेल काउंटरपार्ट इज डेफिनेटली मच लोअर. ओके सर सो कमिंग टू मेल्स नाउ किछि एमती अर्ली इंडिकेशंस अच्छी लाइक जमती इरेक्टाइल डिसफंक्शन बहुत प्रोमिनेंट है गलानी वे यंग मेल्स रे भी इज दैट अ प्रीडिस्पोजर टू हार्ट डिजीजेस that is a very important question because as you know diabetes incidence बढ़ी गला hypertension incidence बढ़ी गला stress in life बढ़ी गला alcohol consumption बढ़ी गला tobacco use बढ़ी गला ये सब पांचटा जिंस दे give rise to erectile dysfunction. One, medicine जोड़ा निया जाए for hypertension, for diabetes, many of them they cause also erectile dysfunction. So a situation this is a very important problem. So that solution is control blood pressure करो, diabetes control करो, औषध संख्या कम करो. That is not practical possible. और कीप योरसेल्फ हैप्पी केमती हम हेनी मत रोग एत गुड़ा रोग अच्छे कौन हैप्पी कौन हेबी स्ट्रेस इन वर्किंग प्लेस स्ट्रेस इन फैमिली इन एट होम कौन हैप्पीनेस आसो सो व्हाट दे डू ओवर द काउंटर जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो मेडिकेशंस अवेलेबल होची फॉस्फोडाइएस्टेज 5 इनहिबिटर्स सिल्डेनाफिल एंड अदर ग्रुप्स देयर इज अ लॉट ऑफ मिसयूज because Viagra misuse so it has set up sildenafil treatment composition sildenafil is over the counter medicines so many people they misuse এই ওষুধের প্রবলেম হচ্ছে বিকজ ভাসোডাইলেশন হয়ে গেলে ইন্টেন্স হেডাক করি হব ব্লরিং অফ ভিজন হব নেগেটিভ জিনিসটা কହୁଛି ମୁଁ ବ୍ଲରିଂ ଅଫ୍ ଭିଜନ୍ ହବ କାନ ମୁହଁ ନାଲ ହେଇଯିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କରୋନାରୀ ଡିଜିଜ୍ ଥିବ କରୋନାରୀ सर्कुलेशन कमिଯିବ स्टिलिंग ହେଇଯିବ ब्लड सर्कुलेशन ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା हार्ट को कम ହେଲା there are many instances not instances many reports and trials जो देखाइछे during sexual activity who have consumed these medications they are dead you find many of them that taken this type of medication कारण ये मेडिसिन काम होची इंटेंस vasodilation जो उनका कोरोनरी आर्टरीज नैरोइंग थिबो ब्लड फ्लो कम है जो दैट विल प्रॉब्लम दैट्स व्हाई बहुत आम बहुत लोगन को काउंसिल करू नो फर्स्ट यू रूल आउट यू डोंट हैव ए कोरोनरी डिजीज यू टेक नो प्रॉब्लम सुपरवाइज्ड वे सुपरवाइज सो सेटा तो होनी सो दिस इज मिस यूटिलाइजेशन जो मान ब्लड प्रेशर अच्छी कि नहीं जानना से भी खाऊँ कोरोनरी डिजीज अच्छी कि नहीं से भी जानना खाऊँ जो मानकर ये दुईटी अच्छी जिनस दे मे लैंड इन प्रॉब्लम लाइक दिस and usually it is a sudden death or a heart attack or arrhythmia. Okay. So coming to that part कि बहुत लोग काफ़ी टाइम रे फिट थांती
ତାଙ୍କର ମେ ବି 1 or 2 ବ୍ୟାଡ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍ସ ଥାଇପାରେ and they are maybe on the spot ମାନେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଥିବେ କି କିଛି ଗୋଟେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଉଥିବେ ତା ମଝିରେ they get a cardiac arrest ତ ଏଇଟା କେଉଁ କେସେସ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଫିଟ୍ ଥାଇକି ବି କେମିତି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ କେତେଗୁଡ଼ିକ ଡିଜିଜ୍ ଅଛି ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଯେଉଁଟାକୁ ସଡନ୍ କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ଡେଥ୍ ହୁଏ ଓକେ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବେ ମାରାଥନ୍ ରନର୍ସ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳାଳି ତାର ଫିଟ୍ you find they're playing suddenly they'll drop down dead right so that is called sudden cardiac death in young apparently healthy people କେମିତି ହେଉଛି ତାର many causes ଖାଲି ତିନିଟି ଜିନିଷ କହିବି ଗୋଟେ ହେଉଛି ତାକୁ କୁହନ୍ତି ହାଇପରଟ୍ରୋଫି କାର୍ଡ଼ିଓମାୟୋପାଥି ହାର୍ଟ ମସଲ୍ଟା ହେରିଟେଡ୍ ଡିଜିଜ୍ଟା ହାର୍ଟ ମସଲ୍ଟା ମୋଟା ହେଇଥାଏ ସେମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉନଥିବ ଟିକେ ଦୌଡ଼ିଲେ ଟିକେ ଧଇଁସଇଁ କ'ଣ ଲାଗୁଥିବ ସେମାନେ ଯଦି ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ଫିଜିକାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବେ ସଡନ୍ଲି ବ୍ରେନ୍କୁ ବ୍ଲଡ଼ ସର୍କୁଲେସନ୍ କମିଯିବ ଦେନ୍ ଡ୍ରପ୍ ଡାଉନ୍ ଡେଡ୍ ଏବଂ ହାର୍ଟକୁ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ କମିଯିବ ଆନଦର ଗ୍ରୁପ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହେରିଟେରୀ ଆର୍ଦିମିଆ ସେଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେବ ଚ୍ୟାନେଲୋପାଥି ବୋଲି ଆମେ କହୁ ଆମ ଟର୍ମରେ ସେଇଭଳିଆ ଡିଜିଜ୍ ଥିଲେ ଡ୍ୟୁରିଂ ପ୍ଲେ ଦେଲ୍ ବି ସଡନ୍ ଡେଥ୍ ଇଭନ୍ ଭେରି ସ୍ମଲ୍ କିଡ୍ସ ଅଲ୍ସୋ ଦେଲ୍ ଡାଇ ସଡନ୍ଲି ହ୍ୱାଇଲ୍ ପ୍ଲେଇଂ okay so egudico jadio amaro screening of these diseases for the present time is difficult kaina you cannot screen from the childhood doing ECG echo and everything not possible but when jodi a strong family history of sudden death I think they should be screened ECG or a small thing ECG or echo may detect early you may अपन ट्रीटमेंट दे पारे कि प्रिवेंट करेंगे ओके कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स को जीवनी दैट्स इट सो गोटे बहुत प्रोमिनेंट इनफॉरमेशन ये रोचे दैट फैमिली हिस्ट्री जदि अच्छी ताहले बहुत अर्ली एज रू भी स्क्रीनिंग टा गोटे बहुत इंपोर्टेंट प्रिवेंटिव हिसाब रे काम करिवो एंड जतबेले स्क्रीनिंग रे हमको किछि भी इरेगुलारिटी दिसुची वी शुड टेक सुपरविजन फ्रॉम एज अर्ली एज पॉसिबल इन टाइम करेक्ट राइट सो ऑन दैट नोट सर ଆପଣ କିଛି ଏମିତି ସ୍କ୍ରିନିଂ ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଟେଷ୍ଟସ୍ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ରେଗୁଲାରଲି या फिर ଯଦି ଲେଟ୍ସ ସେ 35 କ୍ରସ୍ କଲେଣି କି 40 କ୍ରସ୍ କଲେଣି ଦେ ସୁଡ୍ ଅଣ୍ଡରଗୋ ଦିସ୍ ଟେଷ୍ଟସ୍ ଟିକେ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି କିମ୍ବା କେତେ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ସେମାନେ କରିବା କଥା ସେଇଟା ବି ଯଦି ସଜେଷ୍ଟ କରିବେ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁଟା वी फॉलो 2 गाइडलाइंस वन इज अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी एंड अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन गाइडलाइन and the European Society of Cardiology ए दुईटा गाइडलाइन जेहेतु आमर गाइडलाइन गुड़िक से स्ट्रंग नुहे केतुक क्वेश्चन हूँ गाइडलाइन डायरेक्टेड रिकमेंडेशन इज वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो बिकॉज इट बहुत कॉस्टली हो सो आम इंडिविजुअलाइज स्क्रीनिंग आम करूँ पर्टिकुलरली premature atherosclerosis मान होची मेल लेस देन 55 women लेस देन 65 years जदि फैमिली हिस्ट्री अच्छी नंबर 1 क्राइटेरिया नंबर 2 फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपोलिपिडेमिया ये जो सबसेट रहा 5टी सबसेट से डू स्क्रीनिंग वेरी अर्ली फ्रॉम 18 years onwards दिस इज एटा जोटा कहले आज रिगार्ड्स एथेरोस्क्लेरोसिस जो मानकर हाइपरट्रोफी कार्डियोमायोपैथी अच्छी सडन डेथ फैमिली हिस्ट्री अच्छी जो मानकर फैमिलियल एरिथमिया हेरिडिटरी एरिथमिया अच्छे जोड़ा रेयर कंडीशंस बट वी सी आल्सो वेरी ऑफन सो सही सब कंडीशन गुड़ाक द फैमिली स्क्रीनिंग बिकम्स वेरी इंपोर्टेंट वेरी अर्ली इन द लाइफ किंतु कोरोना डिजीज रे जदि ए सब जिनस अच्छी स्टार्ट फ्रॉम 18 वर्ष रु आरंभ हो ओके जदि फैमिली हिस्ट्री किछि नाही एवरीथिंग फाइन नो हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन नाही डायबिटीज नाही सडन कार्डियक डेथ नाही एससीबीडी आम कहूँ एससीबीडी एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज यदि नाही कि स्ट्रोक नाही ओके इट इज 40 at age of 40 routine investigation particular blood sugar and lipid profile these two are very important
बहुत ही इंपोर्टेंट डिटेल सर एटा आपण देले कहीं बहुत थर लोक मैंने इग्नोर करती तापर फैमिली हिस्ट्री थिले भी जब निजको फिट रखुवे मे बी स्क्रीनिंग को एते माने ध्यान देवेनी एते इंपोर्टेंट बोली भावेनी जेबे कि दिस बिकम्स अ बिग प्रिवेंटिव फॉर पीपल ऑन दैट नोट सर हाइपरटेंशन विषय आम बहुत गुड़े हाइलाइट्स तो आज करिचे लो ब्लड प्रेशर रे भी कार्डियक अरेस्ट हबार संभावना थाए कि पीपल हु हैव अ टेंडेंसी ऑफ लो बीपी दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन बिकॉज दर ट्रायल्स गुड़िक अच्छी जो देखा जो मान लो ब्लड प्रेशर से लंजिविटी बेसी ओके लंजिविटी बेसी किंतु सिम्पटम्स बेसी सिम्पटम्स कौन ठिया मुंड बुलेदेला पड़गला भाया लगे पड़गला सो इफ लो हाइपरटेंशन केत गुड़िक डेफिनेट कजेस अच्छी से गुड़िक जब एक्सक्लूड हो गला इफ समबडी हैविंग ये जब हो 90/70 100/70 आई थिंक नथिंग टू वरी अबाउट किंतु जब सिम्पटम्स हो मुंड बुले दूँ पड़गला भाया लगुच देन यू हैव टू आमको खोजा पड़ो जे लो ब्लड प्रेशर पे जी कंडीशन अच्छी से गुड़िक एक्सक्लूड करदे पड़ो जदि ना देन फॉरगेट अबाउट इट फिनिश सर बहुत गुड़े जिनस आज जाना पाइली कि आमर व्यूअर्स मानक किसी क्लोजिंग नोट देवाक चाहिए व्हेन इट कम्स टू द एटीट्यूड टुवर्ड्स टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स coronary artery disease number 1 killer in all over world including India से 80% जो डेथ किंबा मॉर्बिडिटी जोटा कहती सफरिंग 80% इज प्रिवेंटेबल आमर प्रॉब्लम होची पर्टिकुलरली इंडिया और साउथ ईस्ट डेवलपिंग कंट्री प्रिवेंशन एस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस दिया जाए ना रोग है आसिले हॉस्पिटल ले पशिले ट्रीटमेंट है कॉस्टली ट्रीटमेंट डेथ है कि भल हो गले कि कम्प्लिकेसन हो गले आमर हूँ मेडिकल साइंसटा यूठ आरंभ हो किंतु आप देखिए इट स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट इज पीपल एट रिस्क कौन रिस्क माने कौन फॉर एग्जाम्पल मोर जदि फैमिली हिस्ट्री बापा कि माँ कि ब्रदर कि सिस्टर हार्ट डिजीज अच्छी ब्लड प्रेशर अच्छी डायबिटीज अच्छी कोलेस्ट्रॉल अच्छी मोर रिस्क so the intervention starts from that at the risk level then it comes pre-disease before disease before blood pressure comes before diabetes of aguru cholesterol aguru it should be detected and prevented then disease if for example जब diabetes अच्छी blood pressure अच्छी जब तक adequately और optimally treatment कराला next of the complication will be little delayed so unfortunately we are in the stage 4 stage 1 we were detecting the disease in at the complication of the disease so body already compromised है सर so previous 3 जो important preventive जिनसटा that is already over right so मोर request रहिबो हमर वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन एवं World Heart Day during this date 29th of September it is a day of लोकन को जाना पड़ो जे दे शुड बी अवेयर से जानवे सचेतन से ब्लड प्रेशर डायबिटीज स्मोकिंग अनहेल्दी लाइफस्टाइल लैक ऑफ एक्सरसाइज एवं सीडेंटरी लाइफस्टाइल ये सब को मिसई देले 80% जब आम रोगटा प्रिवेंट कर कहीं किसी चेष्टा करवानी डिजीजटा होगला हॉस्पिटल को धाँ दौड़ होकर आसवे फैमिली मेम्बर आसवे कांदे पैसा खर्च करेंगे अल्टीमेटली कौन हम वी डू नॉट नो किंतु वंस देयर इज अ डिजीज हियर मीन्स ये खाली गोटे इम्पोर्टेंट पॉइंट कहि हार्ट डिजीज रो क्योर नहीं इट इज वर्स देन कैंसर कैंसर ट्रीटमेंट कले क्योर हुए हार्ट डिजीज रो that is not there once a heart disease is a lifelong heart disease and author of our chance is always there it's not that treatment stenting hegala bypass surgery hegala valve lagala no it's all misconception at any moment there is a problem and once a disease is always a disease right. And you have to come to the hospital repeatedly if required so ये जो जिनसोड़ा का हमारा which is already everybody knows heart healthy diet
early recognition of blood pressure among diabetes, cessation or avoidance of tobacco in any form, and exercise. ये पांचटा जिनस जदि करवा किसी मात्रा आम सक्सेसफुल हवा ना मत लगुच सब जिन आउ स्ट्रेस लाइफ युड़क मोस्टली प्रिवेंटेबल कजेस जिते पारे जी संभव आम चेष्टा कले आम कि डिजीज इनसीडेंस कम कर ना कि रास्ता नहीं नो वे आउट excellent sir. So on that note sir, gote recent notion achi ebe world heart day ro, that is don't miss a beat. ei narrative ro artha kona sir? Amar every year 29th of September world heart day, this is on the occasion by the World Heart Federation eta palan kara jaye. So every year there is a theme. The theme usually it moves around preventive aspect of heart disease. Okay. So एथर जो अच्छी do not miss a beat. Miss mean heartbeat. जब heartbeat टा सबल चलती from birth till death. Heartbeat टा सबल constantly कोटे 70, 52 or 60 to 90 rate चलती. That maintains life. So missing means if it stops, then problems. So that means अर्थ हूँ आम यहाँ को टू कीप ऑन कंटिन्यूइंग पिटिंग जतिक प्रिवेंटिव मेजर्स अच्छी से गुड़िक आमको पालन करवा ये गुड़िक ऑलमोस्ट जो लास्ट प्रीवियस जतिक थीम गुड़े अच्छी ऑलमोस्ट ऑल सिमिलर एंड द ऑब्जेक्टिव इज अवेयरनेस एंड प्रिवेंटिव एस्पेक्ट ऑफ हार्ट डिजीज. सर आज आपण from a person who writes medicines and helps people understand तांकर एबे करंट स्थिति कोन अछि देहर थ्रू स्कैन्स आज आपण गुडाई बिहेवियरल चेंजेस बतैचंती फॉर आवर व्यूअर्स एंड जो माने भी वीडियो टी को देखिबे से माने एथरो डेफिनेटली बहुत गुडे जिंस बुझिया को पाइबे जे केमिति हम बॉडी रे बहुत जिंस रिलेटेड थाए केमिति जिंस गुडी को केयर न नेले से गुडी को बिगड़ी जाए एंड आपणकर टाइम मो अनुसार आई थिंक मोस्ट वैल्यूएबल एटलीस्ट इन दिस सिटी. सो से आपन को बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड मोर दैट आपन निजर बहुत इंपोर्टेंट वैल्यूएबल टाइम काढ़े के हमको एत्ते गुडे इनसाइट्स आज देचंती. थैंक यू सो मच सर. नमस्कार, धन्यवाद. सो ए वीडियो टी को लाइक करंतु, शेयर करंतु एंड डेफिनेटली निजर नियर एंड डियर वंस मन का संगे शेयर करंतु एंड देखा हबो हमर नेक्स्ट सेगमेंट रे. नमस्कार.